Dinesh Gundurao, Vijay Bharati, MLA. Mr. Rahul Gandhi will make a brief opening statement and then he will take your questions in English and Hindi. Two of you or three of you will ask questions in Tamil. It will be translated by Dr. Jayakumar and Mr. Rahul Gandhi will answer it in English and the answers will be translated into Tamil. Thank you for coming here today. It's a pleasure and an honor for me to be walking in the land of Kamrajji. Of course, there's quite a long way to go, but it's been a very nice first 2 days. So please feel free to ask whatever questions you'd like. जब से भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ उदयपुर में, तब से रिएक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी जब से शुरू हुई यात्रा लगातार सवाल कर रही है। रविशंकर प्रसाद, हेमंत बिस्वा शर्मा एक एक करके ये तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ये तो परिवार बचाओ यात्रा है। क्या वजह आपको लग रहा है? 2-3 दिन यात्रा हो गई, लोगों से आपने मिल लिया, अब समझ लिया होगा आपने कि क्या लोगों का मूड है। क्या वजह आपको लग रहा है बीजेपी इतना ज्यादा आपके ऊपर हमला कर रही है? क्योंकि ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम है और आम लोगों के साथ संक्षिप्त में रखिए। नहीं, देखिए, excuse me, make your answer in English so that everybody can understand. Okay. Should I do that? He wants me to answer. Please. The mic that you Mic is here. Everybody has an opinion. BJP has an opinion. RSS has an opinion. They're welcome to have an opinion. They have a view. They're welcome to have a view. For us in the Congress party, this is a journey. This is an attempt at understanding what is going on the ground in India, and an attempt at undoing some of the damage that the BJP and the RSS have done. But of course, the BJP will have an opinion. I don't grudge them that opinion. They are welcome to have that opinion. मेरा कहना है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है, और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। एक मिनट अंग्रेजी का क्वेश्चन। அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவரா நான் இருக்க மாட்டேன், பொறுப்பு வகிக்க மாட்டேன். ஆனால் இந்தியாவுல இன்னைக்கு ஒற்றுமைக்காக இந்த யாத்திரையை நான் தொடங்குறேன், அதை தலைமையேற்று கொண்டு போறேன்னு சொல்றது மக்களுக்கு ஒரு முரண்பாடா தெரியலையா? Jayakumar, please translate. I will not be the All India Congress Committee President, but you are taking up a trip across the country and you should not contradict me. Where is the contradiction? He is asking why no, you should be the president of the Sorry? party. On the one hand, you refuse to be the president of the party. On the other hand, you have taken a rally. This is to put it in perspective, the Congress party has decided to do a Padyatra across the country. I'm a member of the Congress party, and as a member of the Congress party and a person who agrees with the ideology of the Congress party, I am participating in this yatra. I don't see any contradiction in my participation in this yatra. एक मिनट राहुल, आपने पहले भी कई पद यात्राएं निकाली है, कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि इससे आपको सियासी फायदा भी मिलेगा और कांग्रेस भी मजबूत होगी? क्योंकि सोनिया गांधी ने भी मेंशन किया है कि पार्टी को रिजुविनेट करेगी। देखिए,
मैंने आपको बोला कि पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। Sir, you've always said that a battle of ideologies is going on. Do you think that with this yatra that battle has entered a decisive phase? I mean, frankly, this battle has been going on for a couple thousand years now between two different visions. So I don't think it's, this battle will continue. There are two different visions of India. There have always been two different visions of India. One vision which is rigid, controlling, and another vision which is plural, open-minded. And I think this battle will continue. We are playing our role in this fight. One minute, please. Tamil. சார், காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் வந்து கட்சிக்கு எதிராக இங்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்க இந்த ரத யாத்திரையை வந்து தொடங்கி இருக்கிறீங்க. மக்கள் மத்தியில வந்து இது வந்து நீங்க அந்த கட்சியை வந்து ஒருங்கிணைப்பதற்கான முயற்சிகளை வந்து ஏன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு எண்ணங்கள் வந்து இருக்குது. I think I really need to learn Tamil. But I believe it is one of the harder languages to learn. Is it Beautiful language. beautiful but difficult? Congress கட்சியில், I'm sorry. In Congress party, the second level leaders are taking a stand against the party. Whereas you are taking a yatra. How is that? What is the solution for it? Why they are against it? Against the yatra? I don't think. Why they are against the party? Why not? Why not? The second level leaders you mentioned. Second level leaders are giving the party. You're doing this. Well, look, the Why not you convince them? why I don't convince them? Well, obviously the BJP has better means of putting pressure on them than I do. I mean, that's the answer, right? You see, also, more seriously, as I have said, the BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. So we are not fighting any more a political party. We used to fight a political party. Now the fight is not between one political party and another political party. Now the fight is between the structure of the Indian state and the opposition, right? And everybody understands this. Now, this is not an easy fight. This is a difficult fight. Media is not with the opposition, not because you don't want to be, but because you are under pressure. Your owners have particular relationships. So this is not an easy fight. And a lot of people don't want to fight. A lot of people feel, kahan phasna hai? It's easier. Go make peace with the BJP, fold hands in front of them, and your life will be easier. Unfortunately, this is not my training. This is not my character. Right? So my character is to fight for a certain idea of India, certain notion of this country. And there are many, many people in the Congress party and in the opposition who are convinced of this fact. So that is really what the fight is between. एक मिनट
एक मिनट। राहुल जी आपने कहा कि ये यात्रा जो है वो पोलराइजेशन और नफरत और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर के खिलाफ है, उसके खिलाफ देश को एकजुट कर रहे हैं। पॉलिटिकल यूनिटी के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉलिटिकल यूनिटी से है। Political unity between opposition or between Political unity between opposition and larger political opposition. देखिए, the idea, as I said, of this yatra is to connect with the people, listen to the people, understand what they are facing, and also communicate to them a few things. Communicate the fact that India has changed. The institutional framework of India has been captured, and there is an attempt to place one vision on top of this country. This country which has multiple visions, one vision is being enforced. Now the yatra is a step to do that. The bringing together the opposition, this will of course help that, but that is a separate exercise. राहुल जी, एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि भारत बिखरा ही कब है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। तो आप जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं, हालांकि आपने भाषण में स्पष्ट भी किया, लेकिन अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि भारत में बिखराव कहाँ है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, तो आप क्या कहें? कल मैंने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था मेरा, और एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा, भारत जोड़ो का मतलब क्या है। तो मैंने उससे सवाल पूछा, 12 साल 14 साल की लड़की थी, पेंटिंग कंपटीशन जीती थी। मैंने उससे पहले सवाल पूछा, मैंने कहा कि देखो, अगर आप भारत जोड़ो समझना चाहती हो तो पहले आपको भारत समझना पड़ेगा। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा, भारत क्या है। तो उसका जवाब आया, अंग्रेजी में बोला तो अंग्रेजी में बोलता हूं, भारत is the people of India living in harmony. तो मैंने फिर पूछा, तो if the people of India are not living in harmony, is it Bharat? She says no, that is not Bharat, that is something else. So the question is, are the people of India living in harmony? And the answer, as far as I can see, and that what that little girl could see, is that Bharat is not living in harmony. The country is divided along religious lines, that is very clear. The country is divided along state lines, that is very clear. People do not have employment, people do not have work, that is very clear. 2 or 3 big businesses are controlling everything. We have the 3rd richest man now in India, who is probably going to become the richest very soon, close confidant of the leader of the country. That is not harmonious. You have massive price rise, that is not harmonious. Right? So, for me, India is a conversation between its people, and that conversation has broken down. And so if the conversation has broken down, India has broken down, and that conversation needs to restart. Sir, you said there is no contradiction between you are not taking over as the Congress president and leading a nationwide Padayatra. But the question is, Please, why don't you want to take over? I just want to make it clear, I'm not leading this Padayatra. Participating in the Padayatra. You like to focus on me. That's a different issue. I am participating in this Padayatra. I made it very clear to Jairam, to Mr. Venugopal, that I am not leading this Padayatra. I am participating in this Padayatra. A different thing. The question is, sir, why don't you want to take over as the Congress president? While participating in this, why don't you want to take over? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा पर भारत जोड़ो यात्रा I would like to see whether I become president or don't become president. This will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see,
And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question for you. एक मिनट मंजरी, संक्षिप्त में प्लीज। अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। आप 1 मिनट सिर्फ टीवी चैनल को मैं मौका नहीं दे सकता हूँ, मुझे सबको एक मौका देना पड़ेगा। सिर्फ टीवी चैनल मोनोपोली नहीं कर सकते, प्लीज। मेरा सवाल है, राहुल इधर, मेरा सवाल है कि आप लगातार कहते रहते हैं, आपने लगातार ये बात कहा है कि आप मजबूत करना चाहते हैं देश को और कांग्रेस ही ऐसा विकल्प बन सकती है पूरे देश में, लेकिन आज कांग्रेस की जो स्थिति, आप देश की मजबूती के लिए और जोड़ने के लिए इतना काम कर रहे हैं, कांग्रेस की जो मजबूती के लिए आप क्या करना चाहते हैं? संक्षिप्त में, हाँ। Answer in English. As I've said, I think this yatra is going to help the Congress party. It's not going to harm the Congress party. I don't think it is going to harm the Congress party. सर, राहुल जी, आपने संक्षिप्त में प्लीज। कांग्रेस को आप मजबूत करना चाह रहे हैं और बार बार ये कहा जाता है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस मजबूत होगी उसके बाद अपोजिशन यूनिटी बनेगी, लेकिन जिस तरीके से 2014 में 19 में विपक्ष पूरी तरह हारा है, 24 के लिए क्या आपको लगता है कि जो बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से कर रहे हैं, शरद पवार है, इन सबको इकट्ठा करके और एक मजबूत विकल्प बनाना एक बड़ी चुनौती है आपके सामने? देखिए, it's the responsibility of the entire opposition to come together, and I'm pretty confident. Everybody has a role in it. There's not, it is not that the Congress party is the only party. Everybody has a role in it, and that discussion is in progress. एक मिनट, अरे मैं आ रहा हूँ यार, देखो कुछ नियम के अनुसार करें यार। राहुल जी, न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि हमने लगातार आपके कार्यकर्ताओं से बात की, उनका इंटरव्यू किया, उनकी एक भावना है, वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालने अध्यक्ष बने। क्या अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आप कद्र करेंगे? वो मैंने अभी उसका जवाब दिया वहाँ, जैसे आपने मुझे पूछ लिया। जवाब हो गया, हिंदी में तो बोला मैंने। हाँ? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। I have made my decision. I have made my decision very clear. This is not a correct way. आप अकेले आदमी हैं जो हिम्मत से सवाल करते हैं। देश आपसे जानना चाहता है, आप नहीं, हिम्मत से सवाल मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ हिम्मत से। हाँ, उधर सरकार से सवाल प्लीज संक्षिप्त में पूछेगा, प्लीज संक्षिप्त है। तो सर, आप ये वादा क्यों नहीं करते कि जो संपत्तियां अभी बेची जा रही हैं, अगर कांग्रेस का शासन आया तो उसे वापस लिया जाएगा? ठीक है, सवाल ठीक है, हो गया आपका सवाल, इसका जवाब देंगे। जब से सरकारें बदली हैं, तब से एक नई चीज देखने को मिल रही है, नाम बदलने की। शहर के, रेलवे स्टेशन के, धरोहरों के, जितने नाम या तो कांग्रेस पार्टी के जमाने में रखे गए थे या फ्रीडम मूवमेंट में रखे गए, वो सारे बदले जा रहे हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो भविष्य में कोई कुछ ऑफर नहीं कर सकता, जिसका भविष्य का कोई विजन नहीं है, उसे पीछे से चीजें निकालनी पड़ती हैं। अब ठीक है, सेंटिमेंट है, नाम बदलना है, बदल सकते हो, मगर आगे जो करना है, आगे जो विजन है, उसमें टोटल बैंक्रप्सी है। तो ध्यान हटाने के लिए कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया, बट बेसिक इशू इज दैट देयर इज ए बैंक्रप्सी about what has to be done with the nation, and you can see it everywhere. And it is not just the government, there is deeper than that. India is lacking now a vision for itself.
And that is why India has to keep going into the past and try to find a vision from the past. And nothing from the past is going to save you in the future. Only action in the present is going to save you in the future. We do not agree with the idea that massive, extremely powerful monopolies should be built. We are against this idea. We are not against the idea of corporate India. We are for the idea of corporate India. We are against the idea. We are against unfairness. Right? Against that. If there is unfairness taking place against farmers, we are against that. If there is unfairness taking place against small and medium businesses, we are against that. And we will take action to make sure that fairness prevails. Supriya, short please, short. Sir, when we started this entire program, before that, the last test हमने देखा था वो संसद में था. आपने भी कहा कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, तो संसद की तरफ लड़ाई जब सड़कों पर चले आए हैं, युवाओं ने आपसे बात करी, इसमें कितना बड़ा कोई रिस्पॉन्स करा कि 2 दिन से आप बात करके आए हैं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, और लोग जो आके आपसे मिल रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, वो आपको क्या अपनी नहीं, मेन 2 मुद्दे हैं, बेरोजगारी और प्राइस राइज, और ये सबको मतलब यूनानिमसली ये लोग कह रहे हैं. No supplementary, Supriya, please. No supplementary. Rahul ji, he's answering your question. Rahul ji, ऐसा मौका से जो मोमेंट का कैसा था, मेरे को बहुत इमोशनल फील भी किया था, मैं बहुत इमोशनल देखा था. Supriya, no supplementary question. You have asked a question. He has answered your question. राहुल जी, दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं बहुत फोकस है. We can conclude now after 5 minutes. राहुल जी, दक्षिण भारत में बहुत हम फोकस देख रहे हैं आपकी यात्रा का, कर्नाटका में, केरला में, और आगे हमें बताया गया कि ज्योग्राफिकली और लॉजिस्टिकली यही पॉसिबल था, इसलिए ये रूट बनाया गया. लेकिन एक बात ये भी है कि 2024 में रिवाइवल का जो प्लान है वो दक्षिण भारत. आपका कहना था कि ऊपर से नीचे करने की. I mean, option is Kashmir to Kanyakumari or Kanyakumari to Kashmir. Traditionally, these yatras are done from Kanyakumari to Kashmir, and that is what we chose. So obviously, in the beginning we start in Kanyakumari. Last question. 1 minute. मेरा सवाल ये है कि भारत यात्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ से आपने संदेश दिया है. कोई संदेश नहीं है. Please, I have no once again, last question in Tamil. Last question in Tamil. Jaykumar, சரியா நோட் பண்ணுங்க. சரியா நோட் பண்ணுங்க. சரியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். தேர்தல் வரக்கூடிய கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் கூடுதல் அவகாசம் 21 நாட்கள் இந்த யாத்திரை இருக்குது. இது வந்து ஜோடோ யாத்திரைன்னு பார்க்கிறதா, எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பார்க்கிறதா? In those states where the election are going to be, where you are spending more time for this yatra, is it a part of a campaigning you have started in those states? I don't think we are spending any more time in any state. I've made it. I mean, we've discussed it, and I think we are giving as much time, similar time to all states. साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है. प्लीज अभी राहुल जी को जाना है. प्लीज मुझे बोलने दीजिए. ये सुनिए, कुछ नियम के अनुसार प्लीज, नियम के अनुसार I have given you 2 interviews. Please sit down, please sit down. There are many people here. ये राहुल जी हैं, ये सवाल का जवाब दे रहे हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं. 8 साल से ऐसी प्रेस भेंट वार्ता नहीं की है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाता. तो सुनिए, इनको जाना है. पदयात्रा अभी शुरुआत होगी वापस दोपहर और शाम की. मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोग सब यहाँ आए हैं और कई सवाल उठे हैं
और 150 दिन बाकी हैं, आप भी चलते जाइए और ये आपके सवाल का जवाब देते रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। That is the only question that you are interested in, and I understand it. I understand it. I said that the president's election will take place. I said the president's election will take place, and your questions will be answered. And you said that I have not decided. I have very clearly decided in my mind what I'm going to do. There's no confusion in my mind at all. One thing I'd like to also say about this yatra. Of course, this yatra has a Congress party political element to it, and it has to, because it is a Congress party yatra, and there are many people who are working in it. But I agreed to join this yatra partially because I believe in the ideals of the Congress party, and I think that it's important that those ideals are spread in the country, and partially because I thought that this would be a very good experience for me personally. I think it's a powerful thing to do, not just from the political standpoint, but from a personal standpoint. It's not an easy thing to do, and I thought it would be worthwhile to do that from a personal journey perspective. So for me it is both these things. Of course, these days in politics that's not fashionable, so it's a different way of thinking about things, it's a different way of looking at things. But hopefully I will get some understanding about myself and some understanding about this beautiful country from this yatra. And I think 2, 3 months, 4 months later, I will be a little wiser. Thank you. Thank you. Thank you.